All right. Hi everyone. My name is Pooja Nayak and welcome to YFH Life Care. Well, first of all, good evening to all of you. I hope you all are safe, doing great with your life. And I'm really excited to host this live session because this is gonna be very much interesting and we are going to get some really help जो information हम आज यहाँ पे सुनने वाले हैं या हम मैं आपको जो आज बताने वाली हूँ which is gonna be really grateful and helpful. So first of all, let me tell you all of you that today we are going to talk about diapers, baby diapers. So basically what happens in our society, there are a lot of myths. हम बहुत कुछ सुनते हैं, हमने बहुत कुछ सुना होता है, हम हमारे बड़ों से या सोसाइटी से कहीं से हमने कुछ पढ़ा होता है इंटरनेट पे, बट एवरीथिंग इज नॉट ट्रू. हमने वो सुन रखा है बट उसमें से ज्यादातर इंफॉर्मेशन जो होती है इट इज टोटली अ मिथ. तो आज इस लाइव के दरमियान वो जो मिथ है वो हम ब्रेक करने वाले हैं. दैट इज द मोटिव ऑफ दिस IG लाइव, लेडीज एंड जेंटलमैन. सो फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है आज के हमारे लाइव में. YFH लाइव केयर की ओर से मैं पूजा नायक आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करती हूँ. और थोड़ी ही देर में हम हमारे जो आज के गेस्ट है, जो ऑफ कोर्स जिनके साथ हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, उनको सुनने वाले हैं और बहुत कुछ आज जानने वाले हैं जो हमें शायद अभी तक पता नहीं था, उनका भी हम थोड़ी ही देर में उनको भी वेलकम करेंगे. एंड आई एम super excited to have her on board because she is definitely someone जो हमें बहुत कुछ बता सकती है और हमारा नॉलेज भी बढ़ा सकती है. बट उससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ रिगार्डिंग द कंपनी, दैट व्हाट इज एग्जैक्टली YFH Life Care does. So basically we are the life care products, we are the manufacturer of the life care products जिसमें हम बनाते हैं eco friendly menstrual cups which is available in 3 different sizes. उसके साथ साथ we are into the sanitary pads, we make baby diapers and adult diapers as well. So आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है break the baby diapers myth with YFH life care. So yeah, let's begin. And now I'm waiting for the expert who's gonna join us during this live session. So let me tell you something about her. So basically she is an expert and today we are going to talk about the baby diapers. So I wanted someone who is a child specialist. तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात करने वाली हूँ. So today we are gonna have the MD pediatrician and I think the name is enough, and she is having an experience of more than 7 years in her field. And I think she is here, I can see her, and now I really wanted to join her during the live session. I'm so excited. Yeah, I'm waiting. So ladies and gentlemen, please welcome Dr. Parul Tejani, ma'am. Hi. Hello. Hello, ma'am. Hello. Hello, ma'am. So first of all, it's an honor to have you on board with us. Ladies and gentlemen, she is none other than Dr. Parul Tejani. And I'm so excited, ma'am. I was really excited to talk with you. So first of all, how are you? I'm very well. How are you? Pretty cool. I'm good too. So yeah, first of all, ma'am, please tell us something about yourself that. Definitely. I mean, I know, of course, I know few things about you, that you're the child specialist, but please introduce yourself, and I also want to know something more about you. Okay. Thank you. First of all, thank you for this opportunity. Myself, Dr. Parul Tejani. I'm an MD pediatrician. I'm dealing with general pediatrics. I'm dealing with kids and their problems. And so your topic is a little bit closer to me. And I'm practicing since last 8 years in Surat, Gujarat. Okay. I have owned. Super. Okay. So
ओके, सो एवरीबॉडी, अगर व्यूअर्स अगर आप मुझे देख रहे हैं, हम दोनों को सुन पा रहे हैं, तो प्लीज एक बार अपने कमेंट सेक्शन में बताइए दैट यू वी आर ऑडिबल. So it will be like very grateful for all of us. Also during this whole live session, अगर आपको कोई भी questions हो रहे हैं regarding the anything regarding the child, you know, we have the expert here. So I think it's a great opportunity for all of us कि हम उनसे कुछ सीख पाए या उनसे कुछ जान पाए जो हमें आज तक नहीं पता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आज की अगर हम लाइव की बात करें, दैट इज ब्रेक द बेबी डायपर मिथ्स, वो तो हम बिल्कुल बात करेंगे, बट उससे पहले मुझे आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना है. एज ऑफ कोर्स यू आर अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, सो व्हाट इज योर चाइल्ड साइकोलॉजी? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन टू यू. Basically, as I'm a pediatrician, I'm dealing with children where they are below 5 years of age. Okay, so most of the time I need to deal with their parents, and as the babies are not able to tell everything to us, we need to understand their needs, and we need to fulfill their needs. So Yeah, about child psychology is more about understanding the needs of the child without their being saying to anything. They are not able to say words, and they mostly express by their anger and cry, everything. So we need to understand the child's mind and their behavior. Yeah. So during the current scenario, क्योंकि आज से 5 साल पहले के बच्चे और अभी के बच्चे में काफी बार डिफरेंस आ चुका है, तो Definitely. उनका मेंटल जो माइंडसेट होता है या जिस तरीके से बच्चे का ब्रॉटअप होने लगा है, पहले थिंग्स वर वेरी डिफरेंट when the social media इतना बूम नहीं हुआ था, but Yes. now what happens during this pandemic, मैम, especially that सब बच्चे घर में हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, तो Yes. उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है अभी के बच्चों पे? The first thing, they are not able to have friends and get-togethers and schooling and etc. So they are bound to be at home 24 hours. Okay, so there will be changes in their behavior, particularly with the parents, because they want to go out. We are not allowing them. There are diseases and everything, and above all, online classes are there. So definitely, the anger part has increased about Yes. that. And another thing is, sometimes it happens that because of not meeting with each other and not interacting with each other, their Yes. behavior has reserved to some particular things. Like they are more towards the televisions and mobile games and etc. Totally. Their eating habit has changed. Definitely, their eating habits has changed so much. टोटली. सो लाइक आदत सी हो गई है, खाना खाते टाइम पे भी हमें यूट्यूब पे कार्टून देखना है. सो दीज आर सम ऑफ द यू नो विच इज लाइक चाइल्ड का जो ग्रोथ होना चाहिए, जो पर्सनल ग्रोथ होता है, वो थोड़ा सा यहाँ पे कम हो गया. बट आई रियली होप कि एवरीथिंग विल बी फाइन सून एंड यू नो बच्चे स्कूल जा पाए, कॉलेज जा पाए. So that is the thing. And yes, of course, मैं भूल जाऊं से पहले, you are being a doctor. I just want to clap for you because you guys have done a fabulous job during the pandemic, and I have a huge respect for the whole community. So thank you so much, ma'am, for doing everything you can. And आपने जो भी contribution है आपका, वो हम words में कभी भी describe नहीं कर पाएंगे. We are very thankful for this, really. Thank you. And yeah, so somebody has asked a question that ये live session, बिल्कुल ये live session हम जरूर save करेंगे, तो जितने लोग अभी नहीं देख पा रहे हैं वो बाद में देख पाएंगे. And I want कि जितने लोग मुझे अभी live देख रहे हैं, अगर आपके फैमिली में कोई मॉम टू बी हो या जो ऑलरेडी मॉम हो, ये जिनके बच्चे हो, स्पेसिफिकली उनको ये लाइव सेशन जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हम इसी उन्हीं के बारे में अभी वी आर कमिंग ऑन द टॉपिक जो हमारा आज का टॉपिक है, विच इज ब्रेक द बेबी डायपर मिथ्स, जो है वो हम यहाँ पे ब्रेक करने वाले हैं ड्यूरिंग दिस लाइव सेशन. तो चलिए कम टू द पॉइंट. So it's again welcome to all of you on behalf of YFH Life Care.
सो फर्स्ट क्वेश्चन मैम, मैं आपसे ही ये जो मिथ है वो आप, आई वांट कि मैं बोलूं और आप मुझे बताएं कि वो मिथ है या नहीं है, वो कैसा है, मुझे आपको सिर्फ यू नीड टू एक्सप्लेन दैट थिंग टू अस। Sure. अगर मैं मिथ की बात करूं, सो मिथ में क्या होता है, हमने कुछ चीजें सुन रखी है जो शायद सही नहीं है, वो हमने, हमारी दादी ने बोला होगा या मेरी मम्मी ने बोला होगा, बट वो जो मैं अगेन सेइंग दैट वहां पे जनरेशन गैप आ जाता है, जो चीजें शायद, अगर मैम आप भी अग्री करेंगी कि 5 साल पहले की जो चीजें थी अब वो नहीं है, टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग रियली फास्ट, और उस हिसाब से वी आर बीइंग अ कंपनी, वी आर ट्राइंग कि आज की जो लाइफ है और अभी की लाइफ में बिल्कुल किसी के पास टाइम नहीं है, और ये जितना भी हम सर्व कर पाए ताकि आपकी लाइफ और ज्यादा इजी हो जाए, ऐसे हम कोशिश करते हैं ऐसे लाइफ केयर प्रोडक्ट्स बनाने की। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस बेबी डायपर मिथ। सो द फर्स्ट मिथ इज दैट, पारुल मैम से हम जानेंगे कि ये एग्जैक्टली मिथ है या ये सही है या नहीं है जो इस हमने सुन रखा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट यूजिंग डायपर्स लीड्स टू रैशेस, मतलब so sorry, I'm so Hello. sorry. All right. So the first question is, using diapers leads to rashes. Is it true, ma'am? No, actually, it is not at all true. Diaper can't cause the diaper doesn't causes rash. Actually, the rashes is because of some other reason. Okay. The first Okay. thing I like to clear is first myth is whether to use diaper or not. Like I'm a Yeah, first pediatrician question is and that. Yes, yes. many parents and grandparents especially are coming to me and asking like my bahu wants to use diaper for the baby, तो नहीं यूज करना चाहिए, आप बताओ ये वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. You can use diapers for your babies. Okay? First thing, why to use diapers? First, Hmm. it prevents babies' fussiness from wetness and dampness. Okay. Second, your baby can have a longer and better sleep if he or she is wearing a diaper. So if you are changing her nappy frequently, there will be disturbance in the sleep. Okay. So first thing, yes, you can use diapers for the babies. Second thing, rashes. Okay, the reason for the rashes is different. Okay, first reason is that sometimes your baby is sensitive to particular things, particular antigens. In that case, if your baby is sensitive to the material which is used in the diaper, yes, it can cause rashes, but it is not true for all. Second thing, if you are not changing diapers frequently, sometimes mother thinks that okay, daytime one diaper, nighttime one diaper. No, this is not true. You should change it frequently, like every 3 to 4 hourly. Ideally is 2 hourly, but it is not possible every time. So you should change the diapers every third or fourth hourly, so that the material which is collected inside doesn't affect baby's skin, because after all it is a waste. Okay, it contains so many chemicals that can irritate your skin, particularly the baby's stool. Urine, Hmm. little bit okay, but the material which is there in stool can irritate the skin. Yes, it can cause rashes if you don't change the diapers frequently. Okay. The third thing, if you are using the wrong size diaper, too much tight diaper can cause rashes at the fitting area, not at the perianal site or periurethral site. Okay. So the rash is not because of diaper, it is because of some other causes. Okay. Mm-hmm. Okay. So So definitely basically, you can. yeah. So मैम is saying that you can use diapers, और जैसे मैम ने ऑलरेडी बोला कि जिस तरीके से हम डायपर्स का यूज कर सकते हैं, एंड बेबी की जो स्किन होती है पर्टिकुलर, बेबीज आर वेरी सेंसिटिव, so you really need to take care about it, like as a mom. So I just want to say to all dear moms out there, it's a huge responsibility, being mom. एंड स्पेशली ये सेशन हम उनके लिए ही, आपके लिए ही कर रहे हैं कि ताकि आपके बच्चे को आप अच्छे से उनको बेहतर उनको सर्विसेज दे पाए या बेहतर उनका उनको ब्रॉटअप कर पाए, इसीलिए हम आज ये लाइव सेशन कर रहे हैं। चलिए सेकंड मिथ पे जाते हैं क्विकली।
larger size diapers help prevent rashes. No, that is definitely not true. As I said before, okay, it is not larger size, but it is definitely the smaller size, and the tightly fit diapers can cause rashes. But larger size diapers can't cause rashes. It is just because of the material, that is the stool material, and the pee that is there for the longer period. And the contact time decide whether the rashes will appear or not. Okay, if baby has past stools and you are not changing his or her diaper within a small time, then it will definitely cause some type of reactions and rashes. Okay, whether it is small or large diaper, if material is there, if stool and pee is there for longer duration, definitely cause rashes. Okay, so we should use diaper according to the weight of the child. Okay, not like that the size of your child is M and you are using L, like it will last longer or anything. No, no, it's not like that. The material came out and definitely the spillage and everything will occur. You should use right size of the diaper. Okay, and it doesn't relate with the rashes and etc. Okay. True. Okay, anyone has any questions during the live session, you can always ask us. I'm here to help you. अगर किसी को कोई questions हो रहा है regarding baby diapers or anything regarding child, the ma'am is here, and I think she will definitely help us with all your queries. So please ask us some questions. If you have anything in your mind right now, you can always ask. We are open for that. Okay, let's make it little interactive. Okay, alright, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो मिथ है वो मैं मैम से पूछने वाली हूँ. दैट इज इट राइट और रॉन्ग? द नेक्स्ट मिथ इज दैट हमने सुन रखा है ऐसा that you need to wake your baby in the middle of the night if he or she has wet his or her diaper. अगर उन्होंने अपना डायपर गीला कर दिया है तो बेबी को उठाना पड़ेगा. No, again, it is half correct and half wrong. Actually, if baby has wet the diaper, definitely you need to change it, but there is no need to wet the child and just change it. You can okay, you can change without disturbing the child also, first thing. But if child has fast stool, in that case you need to change it as soon as possible, but don't disturb the sleep. You can wait for 1 or 2 hours. If your child is sleeping calmly, there is no need कि भाई उसको उठाओ, फिर change करो, clean करो. For some duration of time, it is okay that your child is in that wet diaper. Okay, and that is okay if you are not changing it. Okay. Most of the time, at night time, there is need for to change diaper once. Okay. The duration of a single diaper use is around 3 to 4 hours. So after 3 to 4 hours, you can change without disturbing the child. But yes, if he or she has passed stool, in that case, as soon as possible, right? Yes. That is the criteria. Okay. So basically we can change the diaper, but उनको उठाना नहीं है. आप आराम से उनको सोते सोते ही आप change कर दीजिए. Yeah. Most of the time babies are in deep sleep. The reason for using diaper is that only so that the babies can have a calm sleep, undisturbed sleep. Okay. If you are changing frequently and disturbing them, there is no meaning of this using diapers. ओके मैम, तेजानी पीनल मैम पूछ रही है कौन सी कंपनी का डायपर यूज कर सकते हैं मैम. Okay. So yeah, I think answer is yes. YFH like yes, I can this one. Okay, yeah, there are definitely there are many diapers available in market. Okay, and they are of nice quality. Then it was available in past, definitely. We don't have many choices in past. We didn't have that choices, but now we have many choices. Lot of choices, yes. There are a lot of products available. Yeah. So basically, yeah, if I talk about YFH Life Cares, you guys can check out the website.
Okay, we have the website. The link is in the bio. And once the live is done, मैं next story में website की link भी add कर दूंगी. So you just need to swipe up, and you just can go to the website and check it out. ठीक है, मैं आपका लिंक भी एक बार शेयर कर दूंगी स्टोरी में, ताकि आप इजीली उसको चेक कर पाए। और अगर आपको वहां पे नहीं जाना तो अभी भी आप चेक कर सकते हैं, हमारे बायो में ऑलरेडी हमने लिंक वहां पे डाली हुई है। सो यू कैन ऑलवेज गो टू आवर वेबसाइट एंड चेक आउट ऑल द प्रोडक्ट्स वी हैव। So basically, we have the baby products as well as women-oriented products, and the girls and ladies can use that, the life care products. All right, ma'am, हमारे साथ यहाँ पे जुड़ी है. Again, would like to say thank you, Parul ma'am, for joining us today and giving us your precious time. So whosoever is watching us live, you make sure that she is the one who's helping us today, and she is sharing her knowledge with us, which is very precious for all of us. All right, चलिए आगे बढ़ते हैं next हमारे myth की ओर. The next myth is that you should use baby powder on his or her diaper area while changing his nap. Is it right? No, that is not right. Most of the time, I think the mother is using any material, powder or anything, just for the fragrance. Like the first thing is for fragrance, definitely. The second is they think that after using powder, the chances of rashes will be less and like that. But it is not true. Rashes will then also appear if you use this powder or not. Okay, powder doesn't prevent from the rashes. Uh, Rather, it increases the chances of rashes because it will add on some irritation. We are using some chemicals, and on that baby's pee and baby's poo is there, and mixing of all the materials, and it causes more irritation. So if you are using for the purpose to prevent rashes, no, there is no need to use any powder. Okay? Right. There are some rash creams available in market, definitely, that can be used before nap, using that nappies. Okay, that can prevent some kind of rashes to some extent. Okay. So you can go for that standard before rash cream and not the powder. Talcum powder is not at all advisable to use for using this nappies. Okay, so strictly no to the powders. Cool. So first of all, बच्चों का बहुत अच्छी बात है, आपने मुझे ये बात बताई. इवन आई जस्ट गेट टू नो दिस थिंग. जब मैं छोटी थी और मुझे ये सब रैशेस वगैरह कुछ भी हो जाता तो मम्मी हमेशा बोलती थी कि पाउडर लगा दो, पाउडर लगा दो. बट आई जस्ट गेट टू नो दैट पाउडर डज नॉट मेक सेंस टू दैट पर्टिकुलर थिंग. सो पाउडर इज जस्ट फॉर द कूलिंग थिंग, राइट? उससे रैशेस खत्म नहीं होता है. खत्म नहीं होता. यस. सो उसके लिए मैम ने बोला कि देयर आर सम क्रीम्स जो आप यूज कर सकते हैं. अगर आपको रैशेस के थोड़ा इश्यू आ रहा है तो यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर क्रीम टू प्रिवेंट दैट रैशेस, और आप उसको क्योर कर सकते हैं उस तरीके से. थैंक यू. इवन बीइंग एन एडल्ट मुझे ये बात पता चली आज अभी दैट पाउडर से वो चीजें नहीं करेक्ट होती, नहीं प्रिवेंट कर. एंड द सेकंड थिंग prevent rashes is that don't use a diaper for 24 hours. Okay, just give in between diaper free period, okay, so that your baby's skin can breathe. Okay, although these diapers are all having breathable material, but if possible, give some period in that time that your baby's skin is directly in contact with air. So let it air dry so that your skin will be healthy and ready for the next diaper use. Okay, that will be fine. Okay, cool. So that हम diapers को 24 hours use करना it's not good. And उसको और हम कितने frequently diapers change कर सकते हैं, कुछ उसके बारे में? Yeah, I have mentioned that we should change it every 3rd or 4th hourly. That also depends on your baby's age. That also depends on your baby's age and the urine output and etc. Each and every baby doesn't have the same output. Okay, so look for the heaviness of the diaper and whether the child has passed stool or not. If he has passed stool,
you definitely need to change diaper. But in case of pee, you can wait till the diaper is a little bit heavy. But don't let it be too much heavy and the baby is having some sitting problem and etc. Okay. So yes, every third or fourth hourly is better choice. Okay. Yeah, so tentatively third or fourth, or then it depends on the age of the child, right? Yeah, cool. ओके सो द लास्ट मिथ, अब ये जो मिथ हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं वो हमने पूरा रिसर्च किया है दैट कैसे ये हो रहा है और ये सब सुनने में हमें आता है कि ये सब है। सो ये पूरा रिसर्च है हमारा कि इतना सब हमें सुनने में आता है। तो आज हमें बहुत सारी चीजें एक्चुअली पता चल रही है ड्यूरिंग दिस लाइव सेशन। सो चलिए द लास्ट मिथ जो है हम सब ने ऐसा सुना हुआ है दैट इफ there are no leaks or tangible wetness, you don't have to change your baby's diaper. No. That's not true, right? No. We discussed it earlier also that Yeah, definitely. yeah. We have already covered that there are no leaks or tangible wetness. अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बेबी का डायपर नहीं चेंज करना है। सो आपने ऑलरेडी ये भी मेंशन कर दिया है कि एवरी 3 to 4 आवर्स पे हमें बेबी का डायपर चेंज करना, विच इज आइडियल, उस तरीके से ये होना चाहिए। सो दीज आर सम मिथ्स जो हमने आज सुने और हमने डिस्कस भी किए। अब मैं हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो रहा है आपको रिगार्डिंग दिस बेबी डायपर थिंग, दैट आपको अगर कोई कुछ चीज है जो आपको कंफ्यूज कर रही है, अभी भी अगर कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं आपको, तो आप हमें पूछ सकते हैं ड्यूरिंग दिस लाइव सेशन। सो आप प्लीज जरूर बताइए हमें कि आपको क्या पूछना है, क्योंकि मैम आज हमारे साथ जुड़े हैं, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू नो समथिंग जो हमें अभी तक पता नहीं है या हम किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। सो प्लीज आस्क, ओके, इट्स लाइक ओपन। सो आप पूछ सकते हैं आपको जो भी पूछना है। ओके, हाय आर्टिस्ट जोन, हेलो हेलो मैम। Anything regarding the child psychology or something like that, because we have the specialist today. Dr. Parul ma'am is here, and I would like you guys to please ask some questions though, so that we can able to answer that particular one. Okay ma'am, so you are the founder, and you are the founder of Ayush Children Hospital, right? So Yes. like tell me something about the hospital and what kind of services you provide. So basically, I'm a general pediatrician. So I'm dealing with the child diseases from birth up to 18 years of age. I'm seeing the patients. The newborns, I'm dealing with newborns mostly. As I told you, less than 5 years are the main target group of my patient. I think we have a question. Yeah, we have a question. Why if baby gets cranky even if the diaper is not wet? Okay. There are mainly 3 or 4 reasons for the cranky child. First, when your child is cranky, first thing, yes, look for the wetness in the diaper. Yes. Second thing, your baby is hungry, maybe. So, second thing, feed the child. Then also your child is not getting calm. Then the third thing may be the colicky pain, because most of the time this child is on formula feed or mother's milk. Only the milk is the main food. In that case, there are chances of having colic pain in their abdomen. So in that case, yes, it could be colicky pain. Okay, and the fourth thing, in some cases, there may be some insect bites or child is sleeping and maybe some insect bites and all that. So look for these 4 or 5 things which are necessary before jumping to another diagnosis and all that. These are 3 or 4, 5 basics that you
you have to look for when your child is cranky. Okay. Okay. The last thing is illness. Definitely, if your child is ill, and in that case, you need to come to me. Yeah. Okay. The expert is there. The doctors इसीलिए होते हैं कि कभी भी doctors we call them gods. So that's why they are the gods, because हमें कुछ समझ में नहीं आता तब of course they are the expert and the specialist. So we can always consult the doctor. अगर कोई और क्वेश्चन है आपको तो प्लीज फटाफट जल्दी से पूछिए. द मैम इज हियर विद अस फॉर ऑल ऑफ अस एक्चुअली. Anything regarding the child psychology or anything regarding the baby diaper things, anything you would like to ask, that we will be able to answer that. Okay, apart from that, I would like to mention about YFH Life Care. So basically, we are the manufacturers of life care products, and we are India's leading life care product brand. So basically what we deal in eco-friendly menstrual cups, which is available in 3 different sizes, and these menstrual cups are quite trendy these days, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि आज के जमाने में किसी के पास टाइम नहीं है. सब कुछ है, टाइम नहीं है. सो इस जो इतना हैसल है लाइफ में और इतना स्ट्रेस वाली लाइफ हम लोग जी रहे हैं, जो वर्क लाइफ है, इतना सारा प्रेशर हो रहा है, तब मेंस्ट्रुअल कप्स, आई थिंक आई इवन मैम इवन आई वुड लाइक टू आस्क दिस थिंग टू यू, दैट मेंस्ट्रुअल कप्स आप रेकमेंड करेंगे? अगर आपको रेकमेंड करना हो तो डू यू रेकमेंड मेंस्ट्रुअल कप्स? Yes, I do recommend menstrual cups. Yes, you rightly said that nowadays it is in trend. Before 1 or 2 years, it was not like in topic, but nowadays the Yes. females are using this. It is too much comfortable, particularly those women who have larger large amount of flow. Working women, definitely in them it is quite useful. So, in Yeah. my view, if you are comfortable with using the menstrual cups, definitely it is a good choice. Yeah, totally. And then apart from that, we deal in the sanitary pads or baby diapers and adult diapers as well. So these are the product range we have, and everything is mentioned on the website. So I recommend each one of you to go to the website, go through the website. अगर कुछ भी question है, आपको कोई भी issue हो रहा है, so we have the phone number over there, and you can always ask us any question in our DM, or you can always email us अगर आपको कोई भी queries हो रही है regarding all of this product range. But आज particularly मैम को हमने actually इसलिए बुलाया है कि we wanted to talk about the baby diapers और उसके जो myth होते हैं, जो diaper कैसे हम कितने किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, या जो भी myths हमने सुन रखे हैं, वो आज I think इस लाइफ के दरमियान हमें बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी मिल चुकी है कि हमें ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कभी कभी ये नहीं करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो आई थिंक मैंने भी आज बहुत सारी बातें इस लाइफ से सीखी है, दैट ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए. सो दैट इज द थिंग. एंड अगर और कोई भी क्वेश्चंस आपको हो रहे हैं तो प्लीज पूछिए. अच्छा, ओके. अच्छा, ओके. डायपर से बेबी को कोई इश्यू होता है, सू करने में कोई प्रॉब्लम होती है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है क्या? No. Is it? No, it's not like It's that, right? So not like. diapers are for that only. Yes. I think diapers are made for that only. कि आप being a mom, आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है डायपर से. So that is the thing, because majority of the moms, even they are the working women these days. So And I want to add something. There is another myth also. Many times parents asking me that by using diapers, is there any problem with walking in child later on? So definitely no, there is no problem with the walking. There is no problem with using diapers. Child have their normal gait and normal walk. It doesn't interfere with the development of the child.
so safely you can use diapers. Okay. Right. Yeah. So I also wanted to mention one thing that even जब बेबी डायपर्स की हम बात कर रहे हैं, सो ये जो हमारी जो कंपनी है, सो वी आर मेकिंग सच डायपर्स जो ज्यादा पहनने में बहुत कंफर्टेबल है. सी, when we talk about diapers or a sanitary pads or a menstrual cups, which is something very personal, right? So ये सारी चीजें हम अब जो पहन रहे हैं तो हमें कंफर्ट महसूस होना बहुत ज्यादा जरूरी है. So ये comfort, we always make sure that we provide that comfort that आप जब भी डायपर्स पहनते हैं तो बेबी को भी वो ज्यादा खिंचा जो हिचकिचाहट होती है वो ना हो. So which is very important, and why you need to use such brands and why you need to invest in right product, वो उसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि मैम आप भी ये बात मुझसे ज्यादा बेहतर समझती है that there are so many companies and there are so many brands, but again it depends on the quality you use. I think that matters a lot, right, ma'am? Definitely. So that's the thing, and I think we have covered everything regarding the baby diapers. And अगर और भी कोई अगर आपको question है, so I am giving you guys 2 minutes. और उसके बाद we will definitely हम ये आज का जो लाइव सेशन है उसको एक बार कंप्लीट करना चाहेंगे. और आई रियली होप कि आप सबको कुछ न कुछ आज यहाँ से नॉलेज मिला होगा, कुछ जानकारी मिली होगी जो आपको पहले नहीं पता थी. I तो definitely learned so many things from this live session, and I just want to say thank you, Dr. Parul Tejani ma'am, for joining us and giving us your precious time again from your busy schedule. आप भी अपने काम में हैं, बट आपने अपना समय निकाल के हम सबके साथ आपका जो नॉलेज है वो शेयर किया, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद कहना चाहूंगी मैं on behalf of YFF Life Care Products. Yeah. So anything anyone wants to ask, anything regarding anything, like literally anything regarding the child issues और कुछ भी issues हो रहे हैं. So recently I have noticed one thing, ma'am, which I really want to share. So what happens that these days everybody is becoming so very much friendly on like social media platform, and what happens when we meet somebody in real, or even the child especially, as बच्चे जो होते हैं वो ऐसे इतना खुल नहीं पाते हैं, इतना ओपन होके वो बात नहीं कर पाते हैं. एंड जब हम सोशल मीडिया से they are like getting very much comfortable with social media. Everybody is actually getting very much friendly on social media. They say hi, hello, but when we meet in person, so what happens? They're not even able to do the eye contact and everything. So that is the thing like which is happening. I feel it's not good. Overall, personal growth. That is called child psychology. Actually, that's why we need to meet together, and we have like schooling, like face-to-face schooling and everything. Because each and every time it is not possible to learn everything on your mobile and social media. You learn from somebody else's behavior. Actually, children learn from others' behavior by observing them, Yes. by listening to them. Okay, that's why we need schools and the social together that meets and everything. Okay, because on social media it is not possible to observe everybody. Okay, so definitely this is the drawback since last 2 years we are facing. Yeah. So that's true, ma'am. Totally. So we have one question: where you can buy the YFF products? Yeah. So you can buy from the website directly, as I mentioned earlier as well, that I'm gonna share the link in my next story, as well as the link is already there in our bio. You just go and check the products. You just need to write the Google पे आप लिख दीजिए YF Ash Life Care, वेबसाइट ओपन हो जाएगी, उससे आपको सब जितनी भी जानकारी चाहिए वो जानकारी आपको मिल भी जाएगी, और वहीं से आप वो सारी चीजें शॉप भी कर सकते हैं. सो यू मेक श्योर यू प्लीज डू चेक आउट द वेबसाइट.
Again, I would like to mention we deal in baby diapers, adult diapers, as well as menstrual cups, and it's again available in 3 different sizes and sanitary pads as well. Yeah. So I think that's it for today. And अगर आपको और भी कोई questions है तो please feel free to ask us anything regarding this whole live session. Was really great. Thank you everyone for joining in, and especially thank you to Dr. Parul Tejani ma'am for joining us in during this live session, and we are very much grateful for your time and for your efforts and for your contribution towards the society, and of course on the IG live. Thank you so much, ma'am. Thank I'll you. see you very soon. Yeah. You have a great day. Thank you. So, yeah, thank you. Hope you get to know something during this live session. So basically, I'm also saving this live session for the future use. अगर आपको किसी को ये जानकारी शेयर करनी है तो feel free to share this live video with your friends and family. और स्पेसिफिकली मैं ये बात यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि जितनी भी मॉम्स टू बी है, जो मॉम बनने वाली है नियर के फ्यूचर में, या तो जो अभी मॉम बनी है या जो ऑलरेडी मॉम है, बट उनको कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस बेबी डायपर स्टफ, देन यू कैन प्लीज शेयर दिस लाइव सेशन विथ ऑल द फीमेल आउट देयर. और आज का ये जो लाइव सेशन था उसमें हमने डायपर्स के रिलेटेड बात की, बेबी डायपर्स. आगे और भी बहुत सारे लाइव सेशन होने वाले हैं ऑन द रेगुलर बेसिस, एंड आई एम गोना जॉइन यू गाइस वेरी सून. और तब तक मैंने जैसे ही पहले बोला दैट यू गाइस प्लीज डू चेक आउट YFH लाइफ केयर वेबसाइट. आप चेक कर लीजिए एक बार. और भी बहुत सारी जानकारी मैं आपको लाइव के दरमियान देने वाली हूँ, और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जिनको हम बुलाने वाले हैं. और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हमारा ये मोटिव है कि हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, हम अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहते हैं कि जो हमने सुन रखा है वो शायद गलत है कहीं ना कहीं. और हम इसलिए हमारे जितने भी हर सेशन में जो भी गेस्ट स्पीकर को हम बुलाने वाले हैं, वो जो गेस्ट स्पीकर है वो उनमें उनकी जो सिद्धियां हैं, उनकी जो एक्सपर्टीज है, वो उनके हिसाब से हम उनको बुलाएंगे और हम नॉलेज शेयर करेंगे आप सबके साथ, ताकि आपको भी हम एजुकेट कर पाए. और आज के टाइम के और आज के हिसाब के जमाने से जो भी यहाँ पे ट्रेंडी है, जो भी चीजें, जो भी प्रोडक्ट्स आपकी लाइफ को इजी बना सकती है, वैसे प्रोडक्ट्स हमने ऑलरेडी बनाए हैं. तो प्लीज आप वेबसाइट चेक करना मत भूलना. And I think it was a great session with all of you. For now, I'm just going, and I'm also going to check out the website. Like अभी मुझे भी बहुत सारे questions हैं जो मुझे बिल्कुल क्वेश्चन जो है वो मैं बिल्कुल यहाँ पे मेरे दिमाग में है, वो मैं जाके एक बार वापस वेबसाइट चेक करके सारे जो मेरे क्वेश्चन है वो एक बार सॉर्ट आउट करना चाहूंगी. आप भी जरूर जाइए, वेबसाइट चेक कीजिए अभी के अभी. एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले बोला, वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू. यू कैन ऑलवेज डीएम अस, यू कैन ऑलवेज ईमेल अस. वेबसाइट तो है ही आपके पास. तो ठीक है दोस्तों, आई सी यू इन माय नेक्स्ट लाइव सेशन विद अनदर गेस्ट स्पीकर. टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. दिस इज पूजा नायक signing off. I'll see you in my next video. Take care.